Welcome to Media. This is Tariq. So, continuing with our resilience series, we have a special guest. हम उनकी तरफ बाद में आते हैं. पहले, let me share a quote with you that I once read and it stayed with me for a long time. And that quote was कि people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. So that was a very I thought very thoughtful quote and I really liked it. तो मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, थर्ड ईयर का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था एमबीबीएस का. और काशिफ भाई जो थे वो थर्ड ईयर के मेरा ख्याल है उस वक्त स्टूडेंट थे. और जो था I have always been in complete awe of Kashif bhai. I've always been impressed and inspired by him. और जब तक मैंने जानता भी नहीं था और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था KEMHotz का एज अ केमकोलियन, और सारे उस पे कई के बच्चे आके पोस्ट करते थे, ब्लॉग्स थी, और देयर वाज एन ऑनलाइन प्रेजेंस फेसबुक से पहले, ट्विटर से पहले, सारी चीज से, एंड ही स्टार्टेड दैट ऑल. तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि यार KEMHotz का एक प्लेटफॉर्म बनाया, वेबसाइट बनाई, फिर उसके साथ फोरम्स लिंक किए. तो उनसे ये सारा काम जो था ना मैंने सीखा कि प्रो बोर्ड्स के फोरम्स कैसे चलाने, ये सब कुछ करना कैसे है. उस जमाने में मैं जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आई डोंट नो इफ काशिफ भाई रिमेंबर्स, तो आई वाज लाइक कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ऑनलाइन, मैं साइबर बुलिंग का शिकार था, और कुछ लोग ऐसे ही कुछ कह रहे थे, तो मैं बड़ा उदास सा आया था इनके पास. और ये थे, और फिर अदील भाई भी थे. इन लोगों ने मुझे बड़ा हौसला दिया, उमर टेंशन ना ले यार, कुछ नहीं होता, नाम ना होगा तो क्या, नाम नहीं होगा, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, तो वो दैट मेड मी फील इनक्रेडिबल के. और उससे मैंने लाइफ की और सी बहुत सी मुश्किलात से गुजरा. वेबसाइट बनाना, ये सारी थोड़ा बहुत काम करना, फोरम्स चलाना, ये सब कुछ काशिफ भाई से, अदील भाई से, इन लोगों से सीखा मैंने. तो ऑन दैट नोट लेट मी वेलकम काशिफ भाई. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी उमर. मुझे वो पहले वाला वाक्य जो है ना, जो कोट है, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, वो मुझे याद नहीं है कॉन्वर्सेशन, लेकिन ये मुझे याद है कि तुम आए थे. आई रिमेम्बर दैट. एंड I think not to feel like we're patting each other's back, like, and honestly I think you're one of the most talented people I've met during my med school, and the things you've done since then to now are incredible, and they're selfless, and they're just they're the kind of things I think I always thought I should do, but then you've always beaten me in them. Like, for example, वो जो तुमने elective rotations की website बनाई थी, याद है शुरू में? जी जी जी, And बिल्कुल. I think you ran, it's still up, right? It is, it is, Yeah, it it's is. still up. वो एक्चुअली चैनल के नाम पे है, media.com. एक्चुअली चैनल का नाम वेबसाइट के नाम पे है. Website now, yeah, exactly. And then incredible things you've done, and you've still continued to do them, including ये जो अभी YouTube की series तुम बना रहे हो, और including other things you've inspired me in. Like I thought I was good at financials and investing. Like, and I watching a couple of your videos, I think you're a guru in that field as well. बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान. आपके आर्टिकल्स मैंने पढ़ के ना बड़ा कुछ मैं भी इंस्पायर. इट्स गुड व्हेन यू हैव क्रिएटिव मल्टीटास्किंग पीपल अराउंड यू, यू इंस्पायर ईच अदर विदाउट रियलाइजिंग. मतलब सालों साल मेरी आपकी बात नहीं होती, लेकिन आई रीड योर पेपर्स, योर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, आई गेट इंस्पायर्ड. यार क्या बंदा है यार, इस बंदे ने KEMHotz चलाई थी, अब इसको रेजिडेंसी मिल गई. ड्यूरिंग रेजिडेंसी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर रिलीजियस हार्मनी, वो सारा काम मैं देख रहा हूँ, आपके आर्टिकल्स पब्लिश वो पढ़ रहा हूँ. आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड टू डू मोर, and on the other hand you are getting inspired to do more. So thanks a lot. और वो जो कोट था ना, exactly बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो अदील भाई ने कहा था. लेकिन that was in during that meeting जब मैं आपके पास आया था, फिर अदील भाई उसके बाद मुझे ले गए थे मुनीब भाई के पास, and though I remember those moments, I was very sad. मैंने कहा यार क्या यार, बदनाम कर दिया सारी दुनिया के सामने ऑनलाइन. लेकिन no big deal sir. तो काशिफ भाई, जो लोग आपको नहीं जानते, अपने बारे में प्लीज उन्हें बताइए. टेल अस अबाउट योर जर्नी. आप कहाँ से हैं, मेडिकल स्कूल कहाँ से किया, वहां से लेकर अब तक का आपका क्या जर्नी है, अब आप क्या कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड. Sure. जी गो अहेड. Thank you, Umar. So मैं रवा में पैदा हुआ था, which is a small city near Chiniot, not far from Faisalabad, about 3 hours from Lahore. And my parents are from close to Rabwah. Actually, my father is from close to Jaramwala, which is a small village near Faisalabad. And I was about 3 years old जब हम लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए थे, मेरे parents. Then I grew up in West Africa, and वहाँ तकरीबन 10 साल गुजारे. जब मैं वापस आया था
तो फिर मैंने O level किया था, वो भी रब्वा से किया था, and then after that I wanted to do A levels, but उस वक्त A levels था नहीं क्योंकि रब्वा is a small town. I mean now it's grown, but at the time there was no A levels there. So I did FSC after that, and I'll talk to you about the challenges में कि उर्दू कैसे मैंने सीखी. I didn't even know how to write Urdu at that time, and then but I did FSC. And then I went to I applied to a med school, went to King Edward Medical College. I think I'm very privileged to be a Chemcolian, and then after that, you know, I started dabbling into where I want my life to be in the future. थोड़ा सा England का था क्योंकि all my family is in London now. So फिर मुझे था कि London चले जाता हूँ, सबने उधर होना है, या फिर should I come to the US? But I really liked the challenge of USMLE. I've always liked challenges. So, and also मुझे US का system ज़्यादा बेहतर लगता था, उनकी training का system ज़्यादा अच्छा लगता था. So then I was like, all right, I think I'm going to go to the US. I came here, and when we talk about the challenges, I'll talk about my residency application as well. Like, and basically, I just had 3 interviews, and not because of my scores or my application, it was just because of timing. And then I got I ranked one program, I matched in that program, and I did my residency in internal medicine. Then I did a chief year at the same program, and then I've always liked cardiology. Even as a med school, I kind of knew I was going to go into cardiology, but then I kind of I did more rotations with cardiologists here. फिर मुझे लगा कि यही field में मुझे जाना है. I did fellowship in Boston for 3 years, a cardiology fellowship, और उसके बाद cardiology fellowship से पहले I had a strong interest in EKGs and arrhythmias. तो उसमें जाके फिर especially you know during my EP rotations, and especially rotating with certain EP attendings, मुझे था okay, this is exactly what I want to do. And I applied to EP fellowships. I did my first year of EP fellowship in Boston. उस वक्त EP fellowship optional थी 1 year या 2 year. So then I did my second year at the University of Maryland in Baltimore. Then that was considered kind of like an advanced EP year. उसमें ज़्यादा जो VT ablations, lead extractions, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सीखी. उसके बाद then I applied for jobs, and this is my first job right now in Cedar Rapids, Iowa. And I've been attending here for about 3 years now. ठीक है. और ये भाई आपका वीजा स्टेटस क्या था? जब मैं I am a US citizen right now. अच्छा, ठीक है. तो आपको रेजिडेंसी किस पे मिली थी जब आपने रेजिडेंसी? तो जब मैं पाकिस्तान से आया था, तो I sought political asylum because because of my Ahmadi faith background, because of the religious persecution that Ahmadis face in Pakistan. So I decided to seek political asylum. सही है. तो if you don't mind, would you like to share a little bit कि अगर कोई अहमदी अभी आपकी सुन रहे हैं ये इंटरव्यू, what would you like to tell them? How can they seek political asylum in US? What is the process? If you would like to briefly talk about it. So see, the thing is, I've always seen it this way. Asylum is the sunnah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. When he was persecuted in Mecca, he went to Medina to seek asylum. And right now, I think just because of the laws in Pakistan, which are very unfortunate. I mean, Pakistan is my motherland and I love it to death. Like, and because of the unfortunate circumstances currently there, you know, I think it's any Ahmadi who's unfortunately who becomes very prominent is targeted and stuff like that. So I think Ahmadi students, you know, if they have an opportunity and they can make their case, I think that's a very legitimate way to come to this country and to start your career and to start a living. Of course, there's not every Ahmadi does that. Most of my Ahmadi friends, of course, you know, they went the J1 route or the H1 route. But I'd been writing a lot, and even before I came to the US, and after I came here, I started writing a lot about religious freedom in Pakistan. But then before I came, I started writing. I wrote for Dawn a little bit, and I kind of sensed that it was probably not going to be the best idea. आपको fame आ रहा था, तो fame के साथ-साथ, you know, लोगों की तरफ से भी. Especially आपको होता है ना कि अगर मैंने वापस जाके, am I going to stay silent or am I going to keep talking? And knowing myself, I'm going to keep talking. I know that. I can't stay quiet. I'm very passionate about civil rights and human rights. And so फिर मैंने सोचा कि this is probably the best route until things get better and then we go back. सही. So let's briefly touch upon this. कि, you know, what's your concern? कि
you know what I have noticed is कि देखो unfortunately हमारे मुल्क में minorities के rights जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसमें भी जो हैं हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, हम उन सब की फिर भी एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं। Right. लेकिन अहमदीज जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी रिस्पेक्ट उनसे भी कम है। एंड आई से दैट टू ऑल माय फ्रेंड्स कि चलो सही है, यू कैन हैव व्हाटएवर पर्सपेक्टिव यू लाइक, कि ठीक है दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर व्हाटएवर, यू नो, लेकिन दे आर ह्यूमन बीइंग्स and they deserve that basic level of respect. आप जब ऐसी बातें कर रहे हो कि अहमदी आर वॉचेबल कत्ल और इस तरह का, मतलब give them their at least human beings and give them that human level of respect. I have some friends और उनकी I've heard stories and you might know them as well कि किसी के भाई को जाके कत्ल कर दिया है, किसी के फादर को मस्जिद में जाके मार दिया है just because of their religion. That is not acceptable. That's not tolerable. Absolutely. Absolutely, Umar. I think that's, you know, that's very right, and I think this is the change we have to see in Pakistan. कि educated minds, हम जिस तरह आप देखो हम अमेरिका में होते हैं, हमारे attendings Jewish भी हैं, Christian भी हैं, हमारे attendings हर faith के हैं और अच्छे लोग हैं, हम आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज बहुत important है पाकिस्तान में कि आप चाहे unfortunately अहमदियों की आपने बात की कि क्यों अहमदी सबसे ज्यादा persecuted होते हैं। मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडा इतना है, इतना वन साइडेड प्रोपेगेंडा है। कोई अब देखे ना, कोई मेरे से आज तक मेडिकल स्कूल में बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ या खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मैं अहमदी हूँ, या आपने देखा होगा किंग एडवर्ड में भी पोस्टर्स लगे होते थे छोटे-छोटे, जो कादियानियों का यार है वो गद्दार है। I mean, even the word Qadiani is a pejorative. हम नहीं use करते, लेकिन people use it for us. लेकिन I think the problem is कि there's so much propaganda. No one asked me कि do you really believe in this? But वो एक label लग गया कि ठीक है, this is what they believe in and they're kafir and they're there to be hated. जबकि आपने इतनी अच्छी बात की कि we can all agree to disagree. हमें एक सुन्नी है, मुसलमान है, शिया मुसलमान है, एक अहमदी है, जो भी है, I mean, we can all agree to disagree. In the end, we're all Pakistanis, and we all are committed to Pakistan and committed to making Pakistan proud on the international stage. तो मेरे ख्याल में अगर ये हमें समझ आ जाए कि हमारा जो दीन है वो हमारे और अल्लाह के दरमियान में है, और अगर किसी को हम गलत समझते हैं, समझते रहें, उसको बेशक प्यार से उसको कह भी दें कि देखो भाई तुम्हारी ये बिलीफ से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेट्स चाय पी के और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर वो करना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन ये कहना कि भाई आपके साथ हाथ मिलाना बुरी बात है, आपसे मैं दोस्त नहीं बन सकता, you know, वाजिबुल कत्ल कर लो, हाँ exactly. You know, these are all the things. Exactly. I'm so glad you said that. देखिए, we are not having a discussion on the religious or philosophical levels कि भाई सही क्या है, गलत क्या है. We are not saying कि भाई मुस्लिम के जुमरे में है या ये, लेकिन एक चीज पे मेरा पक्का यकीन है कि इंसान तो है ना, और बेसिक इंसान होने की नाते जिस तरह हम एक यहूदी की, एक क्रिश्चियन की, एक हिंदू की, एक सिख की इज्जत कर सकते हैं ना, हम बिल्कुल उसी तरह एक अहमदी की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एंड दे डिजर्व दैट। वो राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था जब हमने पाकिस्तान बनाया था, और उसके बाद somehow you know all the things happened. I don't want to go into that, but I'm so glad we briefly touched upon it because I think it's important for future कि at least हम लोगों को नजर आए कि जिस बंदे को हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जिसको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो है तो इंसान का बच्चा ही, चाहे आपको उसका रिलीजन गलत लगे। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट बट मोर अबाउट द ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट कि है तो इंसान का बच्चा, उसका भी दिल धड़कता है, और जब वो इग्नोर होता है, इस तरह उससे कोई हाथ नहीं मिला रहा, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खा रहा, तो वो उस आप सोचें कि अगर आप उसकी जगह हो तो हाउ वुड यू फील? एंड नन ऑफ अस, वी कैन ब्रैग एज मच एज वी वांट, none of us picked our religion ourselves. We only got our religions because we were born in our households, and we all claim to be right in our own religions, you know. So anyhow, I'm so glad we got that out of the way. अभी quickly मुझे ये बताइएगा कि आपने graduate कब किया था? 2006 में graduate किया, ठीक है, और आपने उसके बाद 3 साल की मेडिसिन में रेजिडेंसी की? Yes, exactly. और 3 साल की आपने कार्डियोलॉजी में फेलोशिप की? Right. 2 साल की आपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फेलोशिप की? कितनी? बीच में 1 साल चीफ रेजिडेंट का भी है। अच्छा, वाह, 4 साल, 3 साल, 7 साल, 7 साल हो गए, और उसके बाद 2 साल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, 9 साल हो गए, राइट? अच्छा, 9 साल के बाद, और अब आपको अटेंडिंग बने हुए 3 साल हो गए। वाह, 9 साल की ट्रेनिंग। तो आप अटेंडिंग कब बने थे? 2006 के बाद आपने ग्रेजुएट किया था, तो पहला साल अटेंडिंग 2018 में, तो अटेंडिंग बनते हुए 12 साल लग गया आपको, ठीक है? It's a long journey.
It is a long journey. और अब आप 3 साल आपको इस current job पे हैं. तो looking back, do you think it was all worth it, भाई? Oh yeah, that's a good question. Definitely, I would do it again in a heartbeat. The thing is, एक चीज जो मेरे ख्याल में बहुत important है, is to be in a specialty that you love and you're passionate about. क्योंकि honestly, उमर, it was very tempting जब internal medicine की residency खत्म हुई. तो बहुत टेम्पटिंग था कि जो मेरे कुछ दोस्त थे, जिसमें मेरे साथ रेजिडेंसी किंग एडवर्ड के मेरे कॉलीग अहमद अरसलान ने भी की थी. तो जीनियस, यू नो हिम वेल, हिज हाँ, वो डिबेट्स में प्रेसिडेंट से, उनसे हमने बोलना सीखा. Yeah, exactly. Yeah. Yes. So, brilliant guy, and he took a job after residency. हमने इकट्ठे residency की थी, और उस वक्त it was tempting कि वो जो pay आ रही होती ना आपको, it's like, oh my god, एक resident salary से इतनी like 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा salary एकदम से हो जाएगी. It was like, should I do 3 years cardiology fellowship या फिर कर लूं अभी, बस शुरू कर लूं अपनी life. And then फिर बड़ा हौसला करके कहा नहीं, ये शौक इसी चीज का है तो यही चीज करनी चाहिए. फिर लेकिन उसका राउट ये था कि क्योंकि I was in a community program, तो I didn't do enough research to get into cardiology fellowship. यहाँ कम से कम मुझे लगता था कि मुझे और अभी करना चाहिए कुछ, अभी premature होगी मेरी application. Then so I did a chief year, and then that allowed me chief year क्योंकि उसमें मेरे weekends तकरीबन off थे, like schedule अच्छा था, तो I had time to do more research, and I did research with an attending in New York. तो उसमें मेरी कार्डियोलॉजी फेलोशिप की जो एप्लीकेशन थी वो भी स्ट्रांग हो गई, कार्डियोलॉजी फेलोशिप की. फिर जब कार्डियोलॉजी फेलोशिप खत्म हो रही थी, उस वक्त जो मेरे कॉलीग्स कार्डियोलॉजी के थे, वो जब जॉब्स ले रहे थे, तो वो जो हॉस्पिटल सैलरी थी उससे भी डबल सैलरीज नजर आ रही थी अब मुझे. तो फेलोशिप पे से 10 गुना ज्यादा पेज वो ले रहे थे, एंड आई वाज लाइक एट दिस पॉइंट, it was very tempting कि अब 2 साल की EP फेलोशिप अभी रहती है, और वो भी एक फेलोशिप सैलरी रेजिडेंट सैलरी के करीब ही होती है. And then I was like, okay, I don't know whether I want to do this. Like, मैंने कहा, look, 2 साल रह गए हैं, let's do it. General cardiology, I like it, but EP is what I really like, really enjoy, really passionate about. तो फिर वो 2 साल जो किए, उसके बाद अब जो मैंने जॉब ली, I mean, it was really worth the wait. It was really worth the wait, क्योंकि now I go to work every day, passionate about my work. I love what I do. I love doing ablations and devices and all that kind of thing. So I really feel like I'm enjoying my life right now. बजाय इसके कि मैं ये नहीं सोचता कि मैं काम पे जा रहा हूँ और बड़ा आज का दिन कैसा गुजरेगा. I really look forward to doing cases in the EP lab. पता है, I can kind of relate to that, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो थी वो तकरीबन 8.5 साल की बनी, 2.5 साल की रिसर्च, 5 साल की रेजिडेंसी, IR की फेलोशिप 1 साल, अब 2 साल की हो गई है, वरना मेरी भी शायद आपके पास 9 साल की आ जाती. लेकिन द पॉइंट I think is कि it is not about finances. पैसे तो आप फिर भी कहीं से भी कमा सकते हो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो. It is about the skill you acquire. और अगर आपके पास एक ऐसा स्किल है जो दुनिया में या पूरे अमेरिका में बहुत कम सिलेक्टेड लोगों के पास है, 500,000 बंदा है या इवन लेस देन दैट, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप दुनिया के कुछ चंद एक एक्सपर्ट्स में से हो उस स्पेशलिटी में, एंड उसकी कोई फाइनेंशियल है ही नहीं, कॉम्पनसेशन कोई कर भी नहीं सकता. लेकिन फाइनेंसेस फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वी विल टॉक अबाउट दैट कि रेजिडेंसी में भाई कितनी रफली सैलरी होती है. 2,500 के आसपास आती है, राइट? हाँ, रेजिडेंसी में पर मंथ कितना मिलता था? 3,000 के करीब. चलो सही है, इट डिपेंड्स, राइट? अगर मेरे ख्याल आप छोटी स्टेट्स में हैं, अलाबामा वगैरह में, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, वहां पे कम होगा. टेक्सास में कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, वहां कम होगी. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, कैलिफोर्निया वगैरह में, तो वहां ज्यादा होगी. तो आई विल से कि 2,500 से 3,000 मिलती है. फेलोशिप में भी तकरीबन इतनी होती है, 200-300 ऊपर चल जाती है. हॉस्पिटलिस्ट की सैलरी जितना मुझे पता है पर ईयर इट रेंजेस बिटवीन समवेयर बिटवीन 180 to 300,000. जिसमें 40% आप टैक्स लगा लें तो कटा के आपके हाथ में $8,000 से $15,000 आएगा महीने का, राइट? कार्डियोलॉजी का कितना है? इसी तरह 5 लाख के करीब एवरेज होगी मेरे ख्याल में. डिपेंड करता है वो भी, जिस तरह आप नेब्रास्का में जॉब लेंगे तो वहां आपको हो सकता है 5.5 मिल जाए, और न्यूयॉर्क में लेंगे तो आपको 3 मिलेगी. तो लेकिन एवरेज पूरे अमेरिका के 5 के करीब ही होगी, 4.5-5. तो उसमें जो है आपका जो कटा के अगेन समवेयर बिटवीन 23 to 33,000 के करीब आपको आएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्टेट में हो, स्टेट टैक्स कितना दे रहे हो. जैसे मैंने बताया 40% आपका अमूमन टैक्स चल जाता है. तो अगर आपने फर्दर फेलोशिप कर ली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की, तो फिर आप किस रेंज में आते हैं? उसमें एक 1.5-2 लाख और उसमें लगा दें अगर आप. ठीक है, तो 6-6.5 लाख, और उसमें फिर आपका कटा के आई थिंक 35 to 36,000 पर मंथ आपको आ रहा है, राइट? बड़ी जल्दी मैथ कर रहे हो.
सर आप फाइनेंस की मैं गाइडेंस स्टैटिस्टिक्स और सारी I do that all on top of my head कि किसमें कितना इन्वेस्ट करना है क्या करना है, लेकिन that's the point, right? That is the point what I'm trying to make here कि अगर आप कार्डियोलॉजी से ईपी या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की तरफ भी जा रहे हो ना, तो आपके पे चेक में $2-3 का फर्क पड़ा है, और 2 साल इट्स नॉट प्रोबेबली वर्थ इट। अगर आप जब लॉन्ग रन में आप फाइनेंस कैलकुलेट करते हो तो इट इज एक्चुअली नॉट वर्थ इट फाइनेंशियली कि आप 3 साल एक रेजिडेंट और फेलो की सैलरी पे करो। फाइनेंशियली इट इज वर्थ कि आप हॉस्पिटलिस्ट करें, आप 2.5-3 लाख की जॉब करें, आप एक्स्ट्रा शिफ्टें पकड़ें। आई नो पर्सनली अ लॉट ऑफ हॉस्पिटलिस्ट हु आर मेकिंग द मोर देन 400 और 500,000, वो एक्स्ट्रा शिफ्टें करते हैं, कुछ लोग दिन में 2-2 शिफ्टें करते हैं, यू नो, you do that and you make that money. So that brings us back to the point. ऐसा नहीं है कि कोई ईपी फेलोशिप करके, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी फेलोशिप करके कोई 2 मिलियन बना रहा है, 1 मिलियन बना रहा है, वो है वहीं पे, right? Financial. So it is not about the finances at the end of the day. It is about the skills that you acquire. So, absolutely. भाई मुझे ये बताइए, what helped you the most to get into the fellowship, and what can other residents do to get a fellowship? Yeah, I think, you know, I think one thing is very important is getting a good mentor early on in your field of interest. तो पहले तो आपको ये पता लगाना है आपकी field of interest है क्या. You know, don't just do cardiology just because you know cardiology एक अच्छी field है. Develop an interest in it and see what you're really interested in, what you really enjoy doing. और उसमें residency is a great time because you're rotating with gastroenterologist, with cardiologist, with rheumatologist. And everyone is gonna have a certain thing they're like. Someone likes the adrenaline of, you know, a STEMI आया है और उसको stent डाल के उसका अभी LED open किया है. Other people don't like that kind of lifestyle. They just want something very calm and peaceful. The rheumatology जैसी चीज जिसमें आप steroids देते रहें पूरा दिन और ठीक, you know, I mean I'm joking, but you know there's other things to that. But so everyone has their own interest or their own comfort level in terms of where they want to go. Find that first, I think, and once you've found that, then find a mentor in that field. I found that really helpful for me. I had a very good attending during my residency who really mentored me so well. He looked after my best interest. वो मुझे बताता था किसके साथ ये abstract लिख लो, इसके साथ ये काम कर लो, और fellowship application के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा. He guided me a lot. It was very helpful to find a mentor like that. And then do some research in that field. You know, even if it's writing 3 to 5 abstracts, I think even that is enough, as long as आपके field of interest में है. क्योंकि fellowship applications को ये देखना है कि are you really passionate about this field? Are you gonna be like a reliable, hardworking guy who's passionate about this? You know, आप आके उन्हीं को तंग करेंगे, like you wouldn't work, you're not going to show interest. They want passionate people. They want people who are interested in that field, because they're also in that field because of the same reason. So definitely write some abstracts, find a mentor, and then apply. And the during application, you know, I applied widely to all the programs that had an EP program, because I already knew I was headed that way. So, but you can, depending on if it's a competitive field like gastroenterology or cardiology, I would say just apply widely if possible. And then the interview is also very important when you're applying for a fellowship. You know, you have to make sure you plan the interview in advance. You plan the interview well. You know, they're the same kind of questions every interview is asked. You know, it's the questions just have genuine answers ready. Don't fake things. Just be genuine. Just be sociable and likable. And I think if you do all the things right and you're hardworking and you're genuinely sincere, most people who are in that category will find fellowships. ठीक है. So भाई, let's go back for a second. आप medical school में जब थे, तब आपने जब 2006 में graduate किया था, did you do any electives at that time या नहीं? I did not. And I know some of my class fellows did, but I did not. ठीक है. Did you know that you were interested in cardiology at that time, or you did not? I did. I actually did. So I did an elective within Pakistan, if you're talking about Pakistan. So Pakistan में मैंने किया था. AFIC है एक, आपको पता है, इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, बिल्कुल. मेरा घर था उसके पास 10 साल में. AFIC से बिल्कुल साथ रहा हूँ. I did a research project there on door to dinner time of AFIC. एक जमाने में मैं भी cardiology में interested था. तो I did door to balloon time. हाँ, डोर टू नीडल एक हमने कैलकुलेट किया था, डोर टू बलून भी कैलकुलेट किया था एफआईसी का, एंड व्हाट वी फाउंड दैट द नंबर्स वर एज गुड एज जो अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. Awesome, that's great, that's awesome. So मैंने AFIC में अपने थर्ड ईयर में एक रोटेशन की थी महीने की,
तो मेरी फुप्पो रहती थी पिंडी में, तो आई वेंट and stayed with her. AFIC साथ ही था, कौन सा इलाका है, सदर इलाका है ना वो जहाँ साथ ही, हाँ हाँ I think सदर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रूमी पार्क है, तो वहाँ सदर से, है। yeah, exactly. So I did an elective there, and क्योंकि उस वक्त I really liked cardiology, but I wasn't 100% sure. तो मैं चाह रहा था कि कहीं change करके किसी और attending के साथ काम करके किसी और setting में काम करके देखता हूँ if I like it. And I really loved it. I watched a few cats. I remember उस वक्त I don't think EP होती थी उधर, अब है लेकिन उस वक्त नहीं थी। तो लेकिन just cardiology in general, it was very exciting. I liked the high like adrenaline किस्म का जो माहौल होता है, like STEMIs आ रहे हैं यार, ऐसा कुछ, I really enjoyed that. So yeah, I think that's the one elective I did and I really enjoyed it, and that's why I think I developed more interest in cardiology. फिर जब मैंने अपनी कर ली थी medical school, before coming to the US, while I was doing my USMLEs की तैयारी, I was working in a cardiology hospital. अच्छा, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में, ठीक है। वो उस वक्त क्योंकि I was back in Rabwah, and वहाँ एक state of the art cardiac center उसी वक्त बना था, which was funded by American doctors. तो वो it's more of like a humanitarian cause, वो तकरीबन free इलाज होता है उधर। तो वहाँ I just worked voluntarily for 6 months, and वहाँ PCI, primary PCI भी शुरू हो गया था, तो बिल्कुल like American model किस्म का। तो it was very fascinating to work there. तो उस वक्त फिर मेरा और solidify हो गया interest cardiology में। सही सही। तो I tell this to all the students who generally listen to me कि भाई कोशिश ये करो कि अपनी स्पेशलिटी जो है ना, इवन टर्मिनल आपकी जो सब स्पेशलिटी है, जितना ज्यादा आप है, आप जब मेडिकल स्टूडेंट हो तब डिसाइड कर लो, उसमें रोटेशंस करो, इलेक्टिव्स करो, और अगर यूएस में आपने आना है तो कोशिश करो कि जो आपके यूएस के इलेक्टिव्स हैं वो सारे उसी में हो, आप स्टेप्स करें। और उसके बाद एक और पॉइंट मैं करना चाहता था कि जब आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, डिड यू हैव एनी ऑब्जर्वरशिप्स और रिसर्च एक्सपीरियंस या नहीं? So I had a little bit of research experience when I came to the US. I did some research in Johns Hopkins. But again, back to your point, जो कि बहुत अच्छा point है कि अपनी फील्ड में करें, मेरे फील्ड में नहीं थी। मेरी जो रिसर्च थी वो ENT में थी। Oh, I know. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। I was there, I think. That's right, exactly. We met. So उसमें ये था कि when you're new to the US and you're trying to get into the system, one of the things I wanted to do is just get my foot in the system, right? And so उस वक्त I wanted something cardiology, but I didn't care. And this was a great opportunity because it was at Johns Hopkins. And तो मुझे था कि okay, this is going to be a great opportunity. I'm going to learn, and this attending whom I worked with was great. He mentored me in research and all that kind of stuff. It was really nice working with him. Like, and I think it's, if possible, if we can choose, we should try to do it in the field of our interest. Because वो research बहुत अच्छी थी, gave me a lot of learning experience, but I couldn't use that towards my applications. हाँ, exactly, cardiology. तो we will continue with this, but आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया कि हॉपकिंस का वो घर था चार्ल्स स्ट्रीट पे कहीं पे था या चार्ल्स विलेज में, और I want to make a comment here on the religious thing again really quick. कि उस घर में मेरे ख्याल है हम 10 लड़के थे, right? Right. 8 या 10 लड़के, काफी थे। उनमें से again on the topic of religious harmony, everybody was Ahmadi. That's right. And I was the only person who was not an Ahmadi. ठीक है? मैं वहाँ महीना रहा हूँ या 2 हफ्ते या 2 महीने, I don't know, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मुझे किसी ने एक दफा भी रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश नहीं की, ठीक है? वो लोग अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, मैं अपना करता था, ना मुझे कभी किसी ने कुछ कहा, ना मैंने उन्हें कुछ कहा। We were all peacefully coexisting in one household. खाना मैं बनाता था, प्याज मैं इनसे कटवाता था क्योंकि इनमें से किसी को खाना नहीं बनाना आता था, बर्तन में इसलिए तो मैं कुछ नहीं कहा किसी ने, तुम खाना बना। बिल्कुल मुझे याद है, मुझे हामिद भाई ने, काशिफ भाई और भी लोग थे, उन्होंने मुझे कहा ऊपर आलू गोश्त बनाने, चावल बनाने, तो खाना मुझे आता था। तो हामिद बाजवा याद है? हामिद भाई थे, हामिद भाई थे, रिजवान सादत भाई थे। हाँ बिल्कुल, सादत भाई। तो मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती बनी, और दैट इज द थिंग कि फिर उसके बाद मुझे पता लगा इनमें से कुछ लोगों की फैमिली को, हामिद भाई के फैमिली का हुआ इंसिडेंट, उनके भाई के, उनके फादर को सिर्फ इसीलिए मार दिया मस्जिद में जाके। देखो, वी वर पीसफुली कोएग्जिस्टिंग। मैं एक घर में, एक हाउस होल्ड में साथ रहा, हमने इकट्ठे मैंने खाना बनाया, हमने सबने खाया। मैं वहां से निकला, मुझे किसी ने कोई रिलीजियस प्रीच नहीं किया, मुझे ब्रेन वॉश नहीं किया। मैं यहाँ आया, मैं रेजिडेंट बना, मैंने $2-2.5 लाख इकट्ठा किया, मैंने यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जिसमें सबको हम शिया सुन्नी जो भी है सबको हम कहते हैं, मेरी ब्रेन वॉशिंग नहीं हुई। आई डिडंट गेट कन्वर्टेड इनटू अहमदी। कहने का मकसद ये है कि इग्नोरेंस जो होता है ना, वो
समटाइम्स इग्नोरेंस में आप समझते रहते हो दूसरे लोग शैतान हैं, वो इतने भी बेचारे बुरे नहीं है, वो भी इंसान के बच्चे हैं, यू नो। तो एग्जैक्टली अब काशिफ भाई रियली क्विक आप मुझे ये बताइए कि हम वी विल प्रोसीड विद रिसर्च रेजिडेंसी, लेकिन एक क्विक कमेंट आपका मुझे चाहिए KEMHotz के बारे में. KEMHotz, what was the reason for KEMHotz? Before, there was humans of KEMU, before there was Facebook, before there was YouTube. You started KEMHotz. So tell us a little bit about KEMHotz. So great memories. It was a great time. I think, okay, internet नया आया था, और तुम्हें पता है, तुमने खुद ये comment किया था कि we both share this passion for new things, कुछ ना कुछ करते रहो, something constructive, something new, right? तो उस वक्त internet was the new thing, और I was in medical school, और फिर मैं सोच रहा था कि ये वेबसाइट्स बनी हुई हैं, why can't we make a website? फिर like उस वक्त पता है वो MSN था और एक और chat का एक forum था, मैं कहता why can't we bring our class together online? I mean, this was kind of a new concept at the time, क्योंकि वहाँ नहीं था इस तरह के class forums थे और ये online chat rooms थे. And so I was like, wait, this is something we can do. I don't think it would be that difficult to learn how to web design. लेकिन जब मैंने learning शुरू की उसकी, I found out it's even easier than what you think. जितना मुझे लगता था कि मुझे महीना लगेगा मैं सीख लूंगा सब कुछ, वो 2 दिन का काम था. It was not that difficult. You just had to put your heart in it. So, and you know this now, लेकिन it was interesting. तो फिर मैंने एक और दोस्त के साथ बैठ के प्लान किया कि कैसे क्या करना चाहिए. सिर्फ forums में तो फिर वो कोई moderation नहीं होती, moderation रखते हैं, हर क्लास का बनाते हैं, पूरे KE का बनाते हैं, और फिर उसमें sections बनाएंगे, dramatic society का section, literary society का section, ये वो सारा कुछ. And then of course फिर हमें कहा था will people even buy into this idea कि ये online हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, what if things get out of hand and all that. Like anyways, I found people like you, and Zuhaib tha, very intelligent guy as well. So I think I found good people, a good team, and we launched the idea, and I think it just took off. Some classes were more active than other classes, लेकिन ये कि तुम लोग की क्लास काफी एक्टिव थी उसपे मेरा ख्याल में, है ना? I think वो जो आपको क्लास के मॉडरेटर्स पे डिपेंड करता था ना कि कितना आप क्लास को लेकर, हमारे खास तौर पे जो शुरू के टाइम थे ना पहले 2-3 साल, उसमें हमारी क्लास काफी आपस में कम बात करती थी, फोरम पे ज्यादा बात करती थी. Exactly. It was a lot of fun, I think. और उसके बाद फिर मैं तो फिर निकल गया था. Then I just handed it over to Zuhaib and you, I think, and I was like, ठीक है, you take it from here. funny बात क्या है कि मैंने जो है ज़ुहैब भाई को ज्यादा लोग आप ज़ुहैब कह रहे हैं, किसी को पता नहीं होगा ज़ुहैब कौन है. डेक्सी भाई हम सॉरी डेक्सी भाई कहते थे. Yeah, very smart guy. वेरी स्मार्ट गाय. हाँ, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ, टैक्सी भाई, अदील भाई, इन लोगों से बड़ा कुछ सीखा. तो मैंने SPWS का इसी तरह बिल्कुल उस तर्ज पे बनाया था, वेबसाइट भी और डिस्कशन फोरम. और व्हाट वाज नाइस इज कि हम उस फोरम पे जितने SPWS के आज तक पोजीशन होल्डर्स थे, पोस्ट होल्डर्स थे, सिंस 1988 we were able to locate that because of that database that was in place. Brilliant. That's great. अच्छा, तो अब कमिंग बैक टू द जर्नी रियली क्विक, जो हमने कहा कि देखिए जी, पिक योर स्पेशलिटी बिफोर हैंड, ठीक है. और आपने यू ब्रीफली टच्ड अपॉन दिस कि आपने जो जॉन्स हॉपकिंस में रिसर्च की थी वो ENT में की, और मैं उस वक्त विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट था हॉपकिंस में, और मैं मेडिसिन में कर रहा था अपनी रिसर्च. Or as a visiting medical student, again it helped me, but didn't help me as much as my radiology research. So that actually stresses on the importance of the fact कि आप अपनी speciality preferably as a medical student pick करो, even subspecialty, और फिर कोशिश करो उसी में electives करो, उसी में research करो. Because what Kashif bhai's application was lacking after medicine residency was कि उनके पास cardiology की research नहीं थी. अगर वो cardiology की research होती तो पहले ही बिफोर अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी, तो रेजिडेंसी बहुत अच्छी जगह मिलती रिलेटिवली, और फेलोशिप में मैच होना आसान होता. लेकिन सिंस ही डिडंट हैव दैट, देन ही हैड टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा ईयर एक तो चीफ का, और उसमें भी रिसर्च करनी पड़ी. तो यू मेक अ डिसीजन इफ यू वांट टू गेट इनटू कंपैटिटिव स्पेशलिटी, डू यू वांट टू डू रिसर्च बिफोर रेजिडेंसी और आफ्टर रेजिडेंसी. आई थिंक इट इज इजियर टू डू रिसर्च बिफोर रेजिडेंसी, जब बच्चे छोटे हैं, इतनी रिस्पांसिबिलिटीज नहीं है, as और पैसे भी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, as compared to once you become an attending, or like after residency it is so much more challenging क्योंकि आप full time काम भी कर रहे हो clinically. Would you agree? I absolutely agree. I think that's a very important point. आजकल तो जब हम मेडिकल स्कूल में थे, इंटरनेट भी इतनी नहीं थी, इतने कनेक्शंस भी नहीं थे. अब मेरे ख्याल में there's people have more connections in the US, people back home in Pakistan, so definitely should
जिस तरह तुमने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव का वो किया था, अनाउंस किया था फेसबुक मेडिडिया इंटर्न्स जी। interns. This is an amazing opportunity. I mean, I wish there was someone like you when I was in med school. कि बैठे बैठे you can get research experience. And इतने यहाँ पे तुमने एक और अपनी वीडियो में वो भी कहा था कि you were very jealous at one point about Aga Khan के जो है। आपने सारी वीडियोस देखी मुझे, that makes me incredibly proud कि कोई तो देख रहा है ना। नहीं, that you're doing a great job with that. लेकिन ये कि वो the thing is this is a great opportunity for Chemcolians. Use this opportunity, especially for people. I'll tell you, there's different financial classes in Pakistan. And honestly speaking, just so other people can relate to this, I know there are students out there who don't have the finances to come to the US. उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि USMLE भी करें, हो सकते हैं वो लोन लेके USMLE के एग्जाम भी दें या अमेरिका आए वगैरह वगैरह. So there are many students like that. Use this opportunity that Umar has launched. He will connect you with other attendings. And I think I told you this, Umar, but I'd also love to be part of that project. Sure, bhai, zarur. Get in touch with attendings here. You can do the research and we can write you letters of recommendation. And you don't even have to travel anywhere, use any money. And this is all free. So use this opportunity. ये बहुत अच्छा एक chance है कि अपनी research portfolio जो है वो अभी से बनाना शुरू कर दें. बाकी जब रेजिडेंसी में आप आए तो जब आपको पता है कि ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिस तरह मुझे क्या करना चाहिए था लुकिंग बैक कि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी है, तो आई शुड हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च विद एन अटेंडिंग इन कार्डियोलॉजी. आई डिड नॉट डू दैट. लेकिन उस वक्त ये भी था कि नई रेजिडेंसी में there's a lot of things going on, but I think at least towards the end of the first year या second year में definitely कोई mentor ढूंढ के start doing something, even if it's case report या abstract, start doing something with someone. सही. तो I'm glad you mentioned the MEDD internship. तो जब मैंने डाला ना तो we got around 100 applications. ठीक है. Oh, wow, उनमें से nice. जिन की इंग्लिश खराब थी मैंने सबको उनको निकाल दी कि यार इनका नहीं. तो जो इंग्लिश सही वाले थे 10-12 उनको मैंने एक असाइनमेंट दी, उन्होंने उस पे काम किया. फिर जो उनमें से निकले उन सबको इंटरव्यू किया. तो हमने 4 लोग हायर किए. उनमें से एक इस वक्त किंग एडवर्ड से, एक रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, एक सिम्स से है और एक शेख खलीफा बिन जैद अल नयान मेडिकल कॉलेज एक लाहौर में वहां से है. और 4 लोग हैं और वो चारों को एक प्रोजेक्ट मिला है. एक को मिला है कि केस रिपोर्ट कैसे लिखना है, उसने उस पर प्रेजेंटेशन बनानी है. एक को ये कि हाउ टू राइट अ रिव्यू पेपर एंड मेटा एनालिसिस. एक को ये कि हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट. और चौथे को कि हाउ टू डिजाइन, एग्जीक्यूट एंड राइट अ रिसर्च पेपर. और 2 हफ्ते में there will be video presentations on the channel, if hopefully hoping they will do a good job. So we had our I'm so glad you mentioned that because we had our first meeting जो team meeting थी yesterday. Oh, nice. और Ayaz, who was the first Chemcolian and first Pakistani I know to take all the USMLE exams before graduation and score 99 in all of them. He's also mentoring, attending there, and I will be happy to include you in there. कि भाई हम इन juniors को guide करें, and this will be a recurring process. We will teach them on how to do research, and then they will make presentations and teach others how to do it, and then they will do these research projects and share their experiences. Right. So we're gonna raise this. They're gonna raise the level of awareness, and at the same time, they will personally benefit from it as well क्योंकि वो projects करेंगे. Absolutely. And this is a great point. Okay, not only doing research, but how to do research. Because at least when I was in med school, I don't think if you asked people around how to do research, I don't think many people would have a clue. किसी को भी नहीं आता. Exactly. So I think that's हाँ, मतलब इवन हमने उसमें आप देखेंगे 2 हफ्ते बाद जो पहली प्रेजेंटेशन आएगी और आप ऑफ कोर्स आई विल ऐड यू टू द टीम मीटिंग एज वेल कि बड़ी बेसिक चीजें बता रहे हैं. पीयर रिव्यूड का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब क्या है, डबल ब्लाइंडेड का मतलब क्या है, यू नो हाउ यू राइट अ पेपर, हाउ यू गो अराउंड इट, जर्नल कैसे पिक करना है, व्हाट इज साइटेशन इंडेक्स, व्हाट इज इंपैक्ट फैक्टर, बेसिक चीजें. तो मुझे ये बताइए, डिड यू विटनेस एनी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज एन आईएमजी? I think so. I mean, so I think जब मैं आया था अमेरिका में, right? I think I applied late. मैंने बताया था ना पहले शुरू में. I applied in October, I think, towards the end of October. क्योंकि मैंने उस वक्त तक अपना CK लेट दिया था मैंने. तो CS भी थोड़ा सा लेट था. लेकिन anyways, मेरा सिर्फ step 1 था जब मैंने application का टाइम आया था. I only had my step 1 results, which were good. लेकिन then I didn't have a complete application. तो उसकी वजह से I think I suffered a lot. अगर मैं
I applied in IMG friendly programs. I'm sure if I was an American graduate, I would have more opportunities. But I think that's just by nature of the fact that when you're an American graduate, you have more contacts here. You have more contacts, you know more attendings, you know more people. And यहाँ के attendings पाकिस्तान के जैसे attendings के तो ना होते, they know you personally, they'll pick up the phone and call. वहाँ तो नहीं है ना कि एक ही letter of recommendation 250 लोगों का बना के उन्होंने कई बार कॉपी पेस्ट कर दिया, 50 रुपए देने हैं किसी बार के बंदे को, वो आपको प्रिंट करके अंदर से ले आएगा. Like here they know you personally, so it's different. I think that is one thing that was very surprising for me कि attendings आपको इतना personally जो है वो आपको जानते हैं इधर. लेकिन बाकी ये कि I applied late and I think basically timing थी. I don't think IMG का इतना बड़ा रोल था. Maybe contacts होते मेरे ज्यादा, अगर मैं graduate होता वो तो होते. लेकिन जो IMGs अभी हैं, मैं उनको ये बताऊंगा, don't think that you have. Definitely AMGs के पास ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज क्यों है? वो एडवांटेज इसलिए है कि one they know more attendings here, they have more contacts here. To make contacts, reach out to people, try to make more contacts here. And timing, from my experience, what I'll tell you, timing was important. मेरे 3 इंटरव्यूज आए थे, उसमें 2 मुझे पसंद नहीं थे, और मुझे था कि इनमें से अच्छा मैं अगले साल रेजिडेंसी कर लूं, 1 साल रिसर्च करता रहूंगा. तो इसलिए फिर मैंने रैंक जो किया था उसमें मेरा हो गया था. तो लेकिन ये कि timing I think was important. And reach out and make contacts. So when you say timing, what do you mean? Oh, like apply on time. So I applied, like I said, just with my step 1 result, right? I am sure कि अगर मेरा step 2 CK का result आया था वो भी बहुत अच्छा था, और जो CS भी pass था first time में, अगर वो सब कुछ lined up होते मेरे on time जब मैंने apply किया था to programs, I am sure जितने मेरे colleagues थे जिनका सारा कुछ time पे था और मेरे जैसे scores थे, they had like 20 interviews. So and they had interviews from great places, and I missed out because of that. मुझे like उनको आ रहे थे Marshall University से interview आ रहा है, किसी को यहाँ से फलाने university से interview आ रहा है, और mine were all 3 were community programs. And community programs have their plus and negative. लेकिन ये कि I think अगर मैंने time पे किया होता, I would have had much more interviews and from much more academic places. Agreed. Or just to summarize briefly what Kashif bhai is saying कि September 1st को या September 15th को जब भी application season इरास का खुल रहा है, तो आपका step 1, step 2 आपके OET एग्जाम और आपकी ECFMG सर्टिफिकेशन तब तक हो चुकी हो. Don't wait for your ECFMG certification to happen in October, November. अब देखो, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, right? लेकिन always make an effort to get everything done before September, ताकि अगस्त में आप ECFMG certified हो, आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, इन सारे. तो plan things accordingly. Try to take your exam in June, July, आखिरी एग्जाम, ताकि आपका अगस्त तक सर्टिफिकेशन हो जाए, right? Absolutely. सही. Absolutely, that is very important. तो भाई अब इतने मसलों में पढ़ना, इतने स्टेप्स करना, स्टेप्स के लिए पढ़ना काफी मुश्किल है, और फिर वीजा की एक इतना बड़ा हर्डल है, फिर इतने पैसे लगाना और इस इतनी खप में पढ़ना. Is it even worth it? Like, why even train in US? Oh yeah. So definitely I think it's worth it, because the thing is क्या वो हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, right? And seek knowledge from cradle to grave, right? Yes, hadith hai. So I think for me, very early on, I knew I have to education का बहुत emphasis था हमारी family में और हमारी community में. Dr. Abdul Salam is like a role model के Nobel, सब बच्चों को हमारी community में पैदा होते हैं ना, उनको कहता है ये aim है Nobel laureate बनना. तो फिर अगर आप EP डॉक्टर है, हाँ, तो अगर आप EP डॉक्टर बनते हैं ना, तो पेरेंट्स की ड्रीम शैटर हो जाती है कि नोबेल लॉरेट नहीं बना. तो लेकिन ये तो है, हाँ जो मर्जी कर ले भाई, नोबेल लॉरेट तो नहीं है ना. एग्जैक्टली. तो वो जो पैशन है ना एजुकेशन का और उसका, और वो जो मैंने हदीस पहले भी बताई, उसमें आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि all this advanced training, you get the latest cutting edge training in the US, which I would not have gotten, definitely not in Pakistan, but even in other countries. इस तरह की cutting edge technology और training जो है वो बहुत कई जगह मिलती हैं. So I feel very fortunate and I would do it all over again कि come to the US and train, especially EP में. आप देख लो, अब इसमें एक और advantage ये भी है ना कि जब आप ये चीजें यहाँ से सीखते हैं
तो मेरे ख्याल में we also owe it to our home country या other countries के ये, क्योंकि एक जो फिलॉसफी होनी चाहिए वो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ के ट्रेन करके मैं एक बहुत बड़ा ईपी डॉक्टर बन गया हूँ और अब देखो मेरी वाह वाह हो रही है और मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, लेकिन हाउ कैन यू हेल्प द कम्युनिटीज, हाउ कैन यू हेल्प ह्यूमैनिटी? तो उसमें अब मैं एक जो प्रोजेक्ट जिसका मैं पार्ट हूँ वो प्रोजेक्ट पेसर है, जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके 100 फ्री पेस मेकर्स इम्प्लांट करते हैं। और मैं कोशिश मेरी है कि पाकिस्तान में ऐसा हो कि हम लोग पाकिस्तान जाएं, शायद अभी तो कोविड है लेकिन जब भी थिंग्स आर बेटर, and implant the 100 free pacemakers in Pakistan. So the thing is, when all people, the students who are watching this, you know, come to this country because of a passion for education, because of a passion for training, not just for money, and also understand कि ये आप वापस भी देना है. And so we went to Bolivia, my colleagues went to Kenya, and inshallah we'll plan to go to Pakistan as well. They can give it back to the communities, give it back to people who are not as privileged, who don't have these things. जो यहाँ से ट्रेनिंग ली है वो यहाँ पर इसका एक और अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि go back and train other people to it. I know someone जो हाँ EP डॉक्टर है, मेरा कॉलीग है जो कि पाकिस्तान जाके एक और कार्डियोलॉजिस्ट को EP पे ट्रेन किया उन्होंने. I mean it's not a fellowship train, but at least he can do flutter ablations and pacemakers and stuff like that. So I think it's totally worth it. I would do it all over again. कि एक तो मैं वो passion पूरा हो जाता है आपकी education का, then you are in a position to help other people more. I'm so glad to hear because you're another passionate person. You know, it's always great to hear somebody who's equally passionate as you. So, talking about the theme of you know, giving back, I founded Association of Pakistani Radiologists based in North America 2 years ago. और हम लोग जितने भी पाकिस्तानी डिसेंट के रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, we found more than 250 हैं इस वक्त. तो we brought them on a platform. फिर हमने पाकिस्तान से अटेंडिंग्स को, ट्रेनीज को उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला. वेबसाइट एक बनाई है, पन्ना की वेबसाइट भी है. आई मेड दैट वेबसाइट. और अब उन्हें हम जो आप बता रहे हैं रिमोट गाइडेंस, मेंटरिंग, वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उन्हें बताते हैं. हमने रिमोट लेक्चर्स दिए हैं. और अब द प्लान वाज कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, सब प्लान वाज कि हम लोग यहाँ से हर साल बाय एनुअली एक टीम जाएगी रेडियोलॉजिस्ट की, यूएस रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल और डायग्नोस्टिक, एंड वी विल टीच देम हाउ टू डू दिस स्टफ. दिस वे वी कैन रेज and improve the quality of healthcare in Pakistan. You know, like you said, by remote education. That is great. Go ahead. No, I said that's amazing. I think जितने भी यहाँ पाकिस्तान डिसेंट के डॉक्टर्स हैं, अगर अपने अपनी फील्ड में इस तरह की लीडरशिप के काम शुरू कर दें, I think that's great because that's the way to give back, and I think we owe it to Pakistan to give back because that's where we did our medical education. हाँ बिल्कुल. एंड आई एक्चुअली टेक इट मोर फ्रॉम इवन ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म कि आप जहां से भी आए हो, आप इंडिया से आए हो इंडिया जाओ, बांग्लादेश से आए हो बांग्लादेश जाओ, और हम सब एक दूसरे की सपोर्ट करें कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान की हेल्प हो रही है ना, चाहे जिस मर्जी मुल्क से है, जिस मर्जी मजहब से है. एट द एंड इंसानियत की मजहब हो, भलाई उसी की है जो सबकी हो. Absolutely. Right. अच्छा, तो मुझे ये बताइए, डू यू एवर फील होमसिक? Sometimes, I mean, so you know, I miss Pakistan honestly. Like Lahore में तुम्हें पता ही है जो, you know, going to Alam Road for dinners and all that kind of stuff, and it was fun. It was great. I miss that. You can't have that experience in the US, right? It's different. तुम अब Edison जाते रहते हो, लेकिन still you can't have that same exact. मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला. Exactly. तो definitely miss that. I mean, it was just amazing. लेकिन ये कि अभी ये कि क्योंकि most of my family is outside Pakistan, they're in London या Dubai, so फिर 2012 के बाद मैं भी I've not been to Pakistan, so it's just I go to London to visit my parents and my family, or Dubai एक दो दफा गया हूँ. लेकिन ये कि I definitely miss Pakistan. It's I wish I could go back, and इसमें एक और फैक्टर ये भी आ जाता है कि I wanted to go back almost every year before this COVID to do some humanitarian work there. Like, and I don't know if you know, there was this cardiologist, Dr. Mehdi Ali. He was he is an interventional cardiologist. He used to go every year to do free like PCIs and CATs and stuff. He got murdered because of his Ahmadi faith like 3 years ago. So वो हर साल जाते थे 2-3 हफ्ते के लिए. वो after that they don't want prominent names in the Ahmadi community to visit right now. So for security purposes, I've not been gone, but that's also very unfortunate. I think
इतना दिल करता है बहुत जाने का, दिल करता है बहुत काम करूं, लेकिन फिर दूसरा मेरी अम्मी परेशान हो जाती हैं कि अच्छा अभी तो ये वाकया हुआ था, एंड देन वहां से भी मुझे हॉस्पिटल से आता है कि अच्छा अभी ना आओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी फिलहाल इस तरह कंट्रीब्यूट कर लो. So I wish those factors were not there, and it would be much easier because honestly, it's much easier for you to go back than for me to go back. So that is one factor that I also have to think about. That most people don't have to think about those things, but I have to. It's unfortunate. Like, once those things get better and I don't have to worry कि मुझे कोई वहाँ issue हो जाएगा, so then I think there's nothing more I want, honestly, than to go back to Pakistan and serve my home country. Isn't that incredibly sad? कि आप It is अपनी very जात sad. के कि आप अपनी जात के मुफाद के लिए जेन्युइनली जाके अपने होमलैंड के लिए जहां आप पले बड़े हैं उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहते हैं, बट यू आर वरिड कि कोई बंदा आके आपको आपके फेथ की बिना पर गोली मार देगा. Right. Yeah. It is very sad क्योंकि अब डॉक्टर मेहदी अली कबर हैं, उनके भी बच्चे यहाँ ओहायो में रहते हैं. He was a professor at the University of Ohio. Is a very well known interventional cardiologist. तो and ऐसा भी नहीं है कि कि वो अब मैं उनको जानता था, and I know the Ahmadis who still go to serve there. It's not like they're going to serve Ahmadis. They're even if they did, that was fine. But they're serving everyone. वहाँ PCIs हो रहे हैं, जो ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट जो है, जो कार्डियोलॉजी का सेंटर है, there's no discrimination. Everyone goes there to find treatment. Actually, most of them are probably not Ahmadis. They're just from Chiniot and neighboring communities who need healthcare. And there's this passion amongst our community to serve. It's just built in. And तो वो इतना it's very sad when you go and you're just serving community. You just want to do what you think is your Islamic duty or your human role to help people. And then कोई आपका उठ के आके अखबार में पढ़ता है कि आज अमेरिका से कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट्स के लिए ये नंबर कॉल करें, and someone just reads that and say, all right, this is a good idea, let's go kill this guy. So that's very unfortunate. It is. Wow. So मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की आपको क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है? I think खाने. And so growing up or medical school में भी cricket और खाने, I think those were the two main things. खाने तो anyways it was great. मैंने अपनी GERD करा लिया खा के लाहौर में, लेकिन cricket भी you can play cricket anywhere. यहाँ तो आपको प्लान करना पड़ता है कि अच्छा कोई मिले, दोस्तों को बुलाओ और ये करो. पहले तो कोई मिले जो खेलना चाहता है और फिर कोई जगह ढूंढो. वहां तो you don't have to find. गली में खड़े हो जाओ, आप खेल लो. गली में खड़े हो जाओ, वो घर से चेयर बाहर लगाओ, उल्टी करके टाइमिंग चेयर, वो विकेट बन जाती है. Exactly. तो भाई लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेली थी? Actually मैंने आयोवा में एक देसी स्टोर में मैं गया और वहां मुझे बैट और बॉल नजर आया, तो मैंने खरीदा. अभी आई थिंक 3-4 महीने हुए हैं मैंने खरीदा. अच्छा, लेकिन अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है खेलने के लिए. उससे पहले जब मैं था ना आई नो, जब मैं रेजिडेंसी में था न्यू जर्सी में, वहां मुझे कभी मस्जिद में लोग मिल जाते थे और ये तो वहां हम लोग खेल लेते थे एक 2 महीने बाद. लेकिन here in Iowa, I don't think I've played cricket in 3 years. Actually, I'm going to be visiting the Pennsylvania area. So I think थोड़ा सा खेलते हैं क्रिकेट. जरूर, मैंने भी रखा हुआ है खरीद के, लेकिन 4 साल हो गए कोई खेलने वाला नहीं मिला. तो अब मुझे ये बताइए कि लाहौर में your favorite spots खाने के. लाहौर में अच्छा, एक तो वो it's been a while, लेकिन okay, MM Alam Road was definitely I think my favorite. MM Alam Road Village, right? Village था, और मुझे अब तो नाम भी भूल गया. It's been a while, लेकिन that place was full of good food. और Nando's भी था. Nando's भी है, बिल्कुल. Nando's was very good. And वो हमारे क्लास का ग्रुप था, we used to hang out a lot, तो हम वहाँ जाते थे खाना खाने. And और वो जो है जो कढ़ाई का कौन से बट की कढ़ाई, बट कढ़ाई. That was really good. Oh my god, it was great. अच्छा, see, I'm a Lahori, right? I was born and raised in, spent most of my childhood in Lahore. तो मुझे बट की कढ़ाई नहीं इतनी अच्छी लगती थी. मैं हमेशा शीफा लाहौर होटल के सामने, अब वो apparently it's big, और निशात, these were my two biggest favorite ones. और जो होस्ट लाइट से ज्यादातर उन्हें बट का पड़ा होता था, तो मैं उन्हें लेके जाता था. मैं कहता तो आपको शीफा और निशात ट्राई कराते हैं, और वो भी साथ ही हैं, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं हुए. तो
मुझे ये बताइए कि ये जो जर्नी रहा है आपका पिछले माशाल्लाह 15-16 साल का सिंस ग्रेजुएशन, वाज अ लॉन्ग टायरिंग जर्नी, स्टेप्स करना, ये सारा कुछ, उसके बाद 9 साल तो आपने ट्रेनिंग में ही लगा दिए, राइट? तो व्हाट हेल्प्ड यू द मोस्ट इन योर एंटायर जर्नी टू कीप गोइंग? I think I've met some incredible people along the way, good mentors, family, and support is very important. Support from family, support from friends, support from good mentors, people who give you good advice, and I think I think all those things helped me a lot in this journey. I probably would have faltered along the way अगर मेरे पास अच्छी support ना होती, advice ना होती, and that advice came from friends, family, and mentors especially. क्योंकि professional your family helps you of course and they give you good advice, like your professional advice, like career की advice है उसमें you have to have a good mentor who's looking after you. That's very important, and have faith, have the willpower. एक चीज मैंने कभी कभी नोट किया है कि कुछ पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स आते हैं, they have a little bit of inferiority complex sometimes, कि वो पाकिस्तान से आए हैं तो शायद they would not be able to attain the same heights as someone else from somewhere else. You should just throw that feeling out of the window as soon as possible. We are no less than anyone else. Actually, मुझे if anything. Go ahead. Yeah, so I was saying, I think one of the things I've noticed is that when in many Pakistani students who come and ask for advice and everything, I sense some form of inferiority complex. कि जिस तरह के हम पाकिस्तानी थोड़े से कम हैं और बाकी जो है ना यहाँ के लोग जो अमेरिकन्स हैं या जो इंडिया से आए हैं या किसी और मुल्क से आए हैं, वो शायद हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं या बेहतर हैं या उनको ये सारे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल IMGs जाए. में नहीं, हाँ सारे सारे IMGs में, IMGs में, इंडियन में भी, चाइनीज that's में true. भी। That's true. हाँ, that's true. लेकिन ये कि I think ये जो mentality है ना, ये हमें और पीछे करती है. We should just throw this out of the window completely जब हम आते हैं कि just remember कि you are going to make your own future by your hard work and by what you believe in. तो आप अपना strong faith रखें, अपना hard work करें. कुछ पाकिस्तानियों में गंदी आदतें भी होती हैं. सब में हमें we can't do things on time. हम कह देंगे हाँ जी इंशाल्लाह कल मैं सबमिट करा दूंगा, लेकिन नहीं परसों होगा. तो just or not remember, being punctual, coming late not to being punctual, meetings. and these things are great turn-offs for attending यहाँ होते. So remember, just be very professional in what you do, believe in yourself, and then move forward. I think Pakistanis are one of the smartest students I've at least worked with, and I know, and you have great potential, but just believe in yourself and just be very professional. Don't try to play like smart or ठीक है attending को नहीं पता चलेगा, इसको नहीं पता चलेगा. नहीं, just be very sincere with your work, and I think don't have any form of inferiority complex, and the sky is the limit. बिल्कुल, I cannot agree more, and just to add to that, what I've learned is कि आपकी पहचान आपकी जुबान से, आपकी कल्चर से, आपकी स्किन कलर से, आपके मजहब से नहीं होती. आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच की वुसअत से होती है कि हाउ ब्रॉडली यू कैन थिंक. और वो चाहे आप जिस मर्जी जुबान में सोचो, आप जिस मर्जी कल्चर से उठ के आओ, जिस मर्जी रंग और मजहब से हो, और अगर आपको अल्लाह ने दिया ना वो दिमाग कि आप उससे सोच सकते हो, तो फिर लाइक यू सेड स्काई इज द लिमिट. यू कैन अचीव एनीथिंग, और आप गोरों के साथ रहते हुए गोरों के मुल्क में गोरों से आगे जा सकते हो. एंड आई हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स माय सेल्फ एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम इट. मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था, मैंने गूगल और फेसबुक के लोगों को प्रेजेंटेशंस देखा, मैंने उससे सीखा, मैंने उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स किए. मैंने पेंसिल्वेनिया में रिसर्च प्रेजेंट किए 3 साल लगातार. I am the only person in the history of Pennsylvania जिसको 3 साल लगातार बेस्ट रिसर्च का अवार्ड मिला. ठीक है, पेंसिल्वेनिया सोसाइटी. लेकिन वो in itself that doesn't mean much. मैं गाई सिंगर में था रेजिडेंसी का. गाई सिंगर रिसर्च डे 4 साल हर साल मुझे अवार्ड दिया है, बाकी यहाँ के अमेरिकन ग्रेजुएट्स को नहीं मिल रहा होता था. I was the most accomplished person in terms of research in my entire residency fellowship. और उससे मुझे ये समझ आई कि मैं तो सोचता था यार मैं तो पाकिस्तान से उठ के आया हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो गोरे हमसे बेहतर हैं. That gives you a lot of belief and faith in your own abilities. और वही चीज हम सारे बच्चों में डाल रहे हैं कि आप जो खाली कोई भी बच्चा है, चाहे वो इंडिया में एम्स में पहुंचता है, चाहे वो पाकिस्तान में केई में पहुंचता है, आखान में, डाउ में, वो इतनी मार खा गया होता है कि उसमें वो स्ट्रेंथ और वो ब्रिलियंस होती है कि वो कल को बैठ के
डॉक्टर काशिफ नदीम बन सकता है, डॉक्टर उमर तारिक बन सकता है, और हमसे भी ये बहुत आगे जा सकता है, राइट? या मेरे ख्याल में हमसे बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, Exactly. एग्जैक्टली। Yeah, तो absolutely. मुझे ये बताइए, नाउ लुकिंग एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इफ देयर वाज एनीथिंग व्हाट हिंडर्ड यू द मोस्ट इन योर जर्नी? I think इस पूरे जर्नी में I think जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि having good mentors was a positive. Not having good mentors early on was probably a negative too. कि अगर मुझे मसलन अभी जो पाकिस्तान में मेरे को स्टूडेंट्स हैं, they have a great advantage कि they have people like उमर तारिक, they have जितने प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाए हैं, it's just amazing, right? उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त जब मैं मेडिकल स्कूल में था, I mean किसी से पूछ रहा था अच्छा तुम USMLE का क्या है, ये है, you know, you just ask some people randomly, but there was no like organized किस्म की mentorship या guidance के programs. So I think that was very lacking early on. Because honestly, I think I could have done USMLEs in my 4th year or even earlier on. But then you like अच्छा ठीक है, कोई mentor होता है ना, कहता है कि this is how you do things, this is how they should be done. फिर early on जिस तरह कोई abstract मेरे ख्याल में अगर वहीं पाकिस्तान में बैठ के कोई abstract भी लिख लेते हैं, या यहाँ जल्दी आके कोई यहाँ कोई network होता है mentorship का कि अच्छा पाकिस्तानी student आया है, या केमकोलियन आया, अच्छा look, let's get in touch with him, let's do a brief career counseling, 10 मिनट का call, और फिर देख लेते हैं अच्छा let's guide him briefly, maybe he's looking for avenues and stuff like that, right? I think those kind of things would have made things much easier and smoother instead of us actually actively finding out. कोई हमें अगर ये सब कुछ बता देता है, कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स हो जाते हैं, which I think केमकाना अब करता है मेरे ख्याल में। जी, they are doing it. और केमकाना right. asked me, I'm a part of their young physicians committee, और यही हम लोग केमकाना की तवसत से भी कर रहे हैं. Right. I'm very glad you mentioned all this and stressed on the importance of this, and I also want to be a little humble at the same time. Thank you very much. आपने सिर्फ मेरा नाम लिया, और भी भाई बहुत लोग हैं. डॉक्टर फैसल खोसा did incredible things under the umbrella of अपना माजिद भाई का बहुत बड़ा नाम है, निश्तर के वो हैं. He has helped a lot of people. Aruba Agha Khan से है, she has done a lot. Taimur is from Khyber. He has done a lot of good things. मेरे से ज्यादा बड़ा नाम, मेरे से ज्यादा काम मेरा ख्याल है और एफर्ट्स जो किए हैं वो वकास नवाज ने किए हैं. उसने किंग एडवर्ड फोरम पे बहुत फरुख ने चलाया था. शुरू में हम हेल्प कर देते थे, लेकिन वकास ने इतना बड़ा टाइम. तो इट्स ऑलवेज अ कंबाइंड एफर्ट. इट टेक्स अ विलेज. हम एक परसेप्शन बदल रहे हैं कि जो सीनियर्स आके आइसोलेट हो जाते थे ना और नहीं करते थे, उसको हम बदल रहे हैं. और जितने लोग करें अच्छा. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि उमर का वकास से, वकास का माजिद से, माजिद का रूबा या तैमूर से या काशिफ भाई से. हम सब कर रहे हैं, और जितने लोग हैं वो सब करें, और जहां से भी हैं करें. आप बांग्लादेश से हो, चाइना से हो, इंडिया से हो, आप जहां से आए हो, प्लीज गिव बैक टू योर कम्युनिटी. ट्राई टू हेल्प आउट, ताकि आपका फ्यूचर जो हो वो आपके प्रेजेंट से बेहतर हो. Right. Absolutely. तो what has been the biggest high, biggest happiness of your life? Happiness? Oh, I think I don't know. I think maybe my wife is my biggest happiness. Mashallah. Yeah, I think so. I got married last year, and I've it was during COVID. It was just with 7 people. आपको पता है पाकिस्तानी शादियों में 500 लोग तो होते हैं minimum, लेकिन हमारी में 7 थे सिर्फ. So it was a very simple wedding, and when I came to Iowa, it was kind of very boring here, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा activities तो है नहीं हमारे, जिस तरह की activities हम करते हैं ज़्यादा. लेकिन ये कि I think since then it's been a change, and yeah, I feel much happier in my life and everything. Other than that, I think my career, of course, it's brought me great happiness that I've had support from my family, and I've reached to a point where I'm doing something which makes me happy on a daily basis. So yeah, probably my career and my wife make me the happiest. All right. Yeah. That was a very good answer. I'm sure Bobby will love it. So yeah. So अब मुझे ये बताइए, what's been looking at the opposite end of the spectrum, what's been the biggest low of your life, and how did you overcome that? I think, honestly speaking, I'll be very honest. I think the biggest low was the discrimination I faced during med school. Again, I have fond memories of med school. Pakistan is my mother. People always confuse कि जब मैं complain करता हूँ कि शायद ये bitter है, या शायद he doesn't like. Or he's anti-Pakistan, which I've also witnessed. You don't like Pakistan, you hate Pakistan. That's why you're bashing Pakistan all the time. Exactly, which are two very different things. अब जिस तरह अगर मुसलमान है हम यहाँ अमेरिका में और हमें इस्लामोफोबिया फेस होता है,
तो अब इसका ये दिन मतलब हम यूएस को हेट करते हैं. अगर कोई मुझे आके कहता है अगर कि you're a terrorist because you're Muslim, right? अब I have all right to say I felt discriminated and hated here, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि मैं यूएस के खिलाफ हूँ. तो इसी तरह I think that was shocking क्योंकि मैंने बताया था मैं अफ्रीका में पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, पैदा तो पाकिस्तान में हुआ था. तो then I didn't मुझे अम्मी ने शुरू से ये बताया था कि पाकिस्तान के फल जाओगे तो देखना पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान के क्रिकेट और ये, like I had this image of Pakistan, right? My parents of course are Pakistani, and then I went back to Pakistan and then when I went to Lahore, तो वो जो सारी थी ना वो सारा कुछ तो ठीक था, लेकिन जो I was not expecting, मुझे था कि okay fine, people don't like us because of our faith. I knew that. Yeah, that was not new to me, but मुझे इतनी extent का नहीं पता था कि medical students जो हैं वो like they will leave the table if I'm going to eat there. या अगर मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम तो वो कहेंगे hey, like क्योंकि सलाम का जवाब देना नहीं चाहिए अहमदी को. Like it's just like that was a low. It's just like okay, what is going on here? I mean, what's the big deal? It's okay. I mean, I was born in an Ahmadi family. I mean, मेरा circumstances थोड़े से शायद different हों क्योंकि I have studied religion in detail. Like, anyways, people are just they are just trying to live a normal life and just get along. That was, I think, the most shocking thing in my whole life so far. Was the first time I was exposed to Lahore and the kind of unwelcomeness I felt. The kind of hatred. Vans पे लिखा जो कादियानियों का यार है गद्दार है. एक दफा I remember I was walking. I don't remember what part of Lahore, but my brother was in fast है ना वो जो हाँ. So I used to go visit him like on weekends अगर मैं घर नहीं गया या इस तरह करके. And like there was a sermon going on. इतना ऊंची किसी जहाँ. It was all against like Qadiani, Wajib al-Qatl or Qadian. I was just like, God, what is going on here? It was like, it was very traumatizing psychologically to kind of witness that. Like, and I mean, I've always believed this. I believe in my countrymen. I believe in the people of Pakistan, and I know this phase will go away. And I think people genuinely deep down, Pakistanis are very good people, and they will realize that these divisions are artificial and man-made, and these divisions don't make sense. I mean, after all, in the end, we all mean well for Pakistan. And after all of this, I could have said, I hate Pakistan. I don't want to do anything with Pakistan. And that's it. I'm done, right? But I choose Pakistan because it is my country. And I mean, we are all Pakistanis. We can't escape that fact. We just have to get along and move ahead. And I'll tell you, this is what will be the inflection point in Pakistan's course, would be when we change that attitude where we're all one and we're united to make Pakistan a very progressive state. Religious harmony, and again, I don't want to go into the religious debate. We're not talking about कौन Muslim है, कौन Islam के ज़ुमरे से बाहर है, जो भी आपकी है ना beliefs, we can all peacefully and respectfully coexist. जिस तरह मैं एक घर में अहमदी के साथ रह के निकला हूँ, and I was able to build a masjid जो मैं पिछले 6 साल से चला रहा हूँ, जिसमें हम सब तो मेरा faith नहीं बदला, ठीक है. हम लोग एक दूसरे के साथ respectfully रह सकते हैं. किसी भी इंसान को वाजिबुल कत्ल करना नहीं बनता कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा उल्टा सीधा, तो that doesn't make any sense. और सब हमारे मुल्क में जो भी बंदा है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो अहमदी है, वो हमारे मुल्क का बंदा है और वो पाकिस्तानी, और हमें उस सबकी कदर करनी चाहिए. थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. तो मुझे ये बताइए, एनी अदर रिग्रेट्स थ्रूआउट दिस जर्नी अदर देन द रिलीजियस स्टफ? No, actually, even the religious stuff is not a regret. It's just it was just a low experience. But honestly, I think nothing, no regrets at all. I feel like I would do most of the things I did the same way. Nice. I think this has been. I'm very privileged, I think, and I'm very privileged that I went to KE, that I came to the US, and I've trained in the field of my interest. So I'm very grateful to God and all the people along the way. And I think it's time to give back to the people who might not be as privileged. सही. तो if you don't mind me asking, कि आपके USMLE में क्या scores थे? 241 था मेरा ख्याल है, और 243 था, something like that. 241, उस वक्त 99 कहते, इतने पे खुश थे हम कि 99 आ गए. हाँ नहीं, पता है step 1 पास फेल हो गया. Oh हाँ, exactly. और CS निकल गया, right? CS खत्म हो गया.
हाँ, exactly. Yeah, big changes. Yep. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि did you have any financial limitations that restricted your growth US MLEs वगैरह की, या you didn't? Yeah, so I come from a very modest family. Okay. And so yes, actually it was very timely कि मेरे भाई की अभी job लगी थी, and वो he could pay for my USMLE step 1 exam. When at that time, of course, I come from a very modest family. We definitely, I don't think I was in a position to ask my dad to pay for my USMLEs and for my US visa and for all travel and for stay here jab tak residency milti. I mean, I don't think I was in a position at that time. This is why I said for people who are not in a financial position, that we should support them, and they should know that they have support. They should reach out. Definitely, I was fortunate, alhamdulillah, my brother just moved to the UK and started a job, and so he could pay for my initial USMLE की फीस वगैरह और US के travel और इस तरह के. अच्छा, ठीक है, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. और जिन लोगों को नहीं पता, इस वक्त केमकाना और अपना स्कॉलरशिप्स दे रही है, इंशाल्लाह वेरी सून, इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई विल मेक अ वीडियो ऑन दोज एज वेल. आई स्पोक टू डॉक्टर मसूद अकबर कपल ऑफ नाइट्स बैक, और यही हमारी डिटेल बात हो रही थी कि वी विल मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन केमकाना स्कॉलरशिप्स एंड हाउ टू परस्यू देम एंड व्हाट आर दीज अपॉर्चुनिटीज जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सो दैट दे डोंट गो थ्रू देम अलोन. उसमें एक छोटी सी मैं कमेंट दूंगा काफी ज्यादा दुख के साथ, कि इन लोगों ने ना, केमकाना वालों ने लोन दिए थे इस तरह लोगों को, 5-10-15 हज़ार डॉलर जो भी हैं, और द एक्सपेक्टेशन वाज कि दे विल रिटर्न इट एंड दैट वुड बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ. तो किसी ने 1 रुपया वापस नहीं दिया, एक भी बंदे ने नहीं. तो वो, हाँ, और वो सालों साल चला. मतलब इन लोगों ने पिछले 10-20 साल में जितने भी लोगों को पैसे दिए थे, किसी ने वापस नहीं किया. दे वर ऑल लोन. फिर दे हैड टू गिव देयर इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट कलेक्शन एजेंसीज, और फिर मेरी इनसे बात हो रही थी, कहते 1.5-2 लाख आ गया हमारे पास इन अ स्पैन ऑफ वीक्स. तो इट्स सैड यार. प्लीज यार, देखो ऐसे ना करो कोई भी. देखिए, आप याद रखो कि आप कितने मजबूर हो इस वक्त, और अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल हेल्प कर रहा है, तो जब आपका टाइम आता है तो प्लीज गिव बैक, राइट? प्लीज रिटर्न द फेवर, गिव बैक टू योर कम्युनिटी, डोंट बी सेल्फिश. अभी आपको पता है कि आपके लिए ये 5-10 हज़ार डॉलर की कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन जब आप अटेंडिंग बन जाओगे, आपके लिए ये 5-10 हज़ार डॉलर की कोई बड़ी इतनी वैल्यू नहीं होगी. तो प्लीज गिव इट बैक, ताकि कोई ऐसा आपके जैसा बंदा हो, उसकी हेल्प हो सके. तो भाई ये बताइएगा, did you have any problems communicating in English when you started? Like, how were your communication skills? The reason I ask कि हम लोगों को American English का नहीं पता होता, और no matter wherever you're coming from, it takes some time getting used to the American accent. समझने के लिए खास तौर पे, you can still talk in whatever accent you want to talk, but American English में थोड़ा problem होता है. तो what would you say about that? Yeah, I mean, I think if I was raised in Pakistan, I probably would have more problems. But because I grew up in Africa, where English बोली, वो जिस country में हम थे, वो anglophone country थी, so I grew up in an English country. So I didn't have that much of a problem. But still, even if you grew up learning and knowing English well, it's a different culture. It's the slang different होती है, terminology थोड़ी बहुत different होती है, expressions काफी different है, expressions काफी different होते हैं. Then those are things you learn along the way. मैं off the top of my head मुझे कोई example याद नहीं आएगी अभी, लेकिन इस तरह मैं उतनी पिछले दिनों दोस्तों से बात कर रहा था कि काफी कुछ इस तरह के expressions होते हैं जो आप पहले दफा सुनते हैं, and then you don't know what they mean. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता you learn their meanings with time. So yeah, I mean, there's definitely going to be, but I think that learning curve is pretty steep. It's आपके आधा intern life में आप काफी कुछ learn कर जाते हैं उस लिहाज से. तो but I think if I was there were many, not many, but there were some individuals who came from Pakistan, and they're actually more from other countries. Like मुझे अभी तक याद है, मेरी एक co-resident थी जो कि चाइना से थी, तो उस बेचारी को तो बहुत ही कम बोलना आता था इंग्लिश. मुझे तो कभी हैरानी होती थी कि how she's going to survive in residency. तो it was a big problem for the program. उसको like 1 साल probation सिर्फ इसी वजह से उनको करनी पड़ी थी. Wow. क्योंकि वो she was really not very good with English. So I think ये तुम्हारा अच्छा पॉइंट है कि जो यहाँ आना चाहते हैं वो इस पे भी तवज्जो दें,
और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो हैं आजकल तो उम्र मेरे ख्याल में बहुत आसान हो गया, उस वक्त थोड़ा डिफरेंट था। अब तो ये कि people who can watch American shows, you know, you can talk to people like you and me here, and you kind of learn just passively how we talk and all the kind of stuff. But I think ab aasan ho gaya, lekin ye ke it's an important thing. You're right. If someone thinks they have a problem with communication or English fluency, it's something they should simultaneously work on if they want to make America their second home. And I will also add कि भाई अगर आपको इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है तो आई मेड अ सेपरेट वीडियो इन विच आई मेंशन कि भाई आप रीडिंग अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, और स्पीकिंग और लिसनिंग कैसे कर सकते हो। ये हर एक पे आपको सेपरेट तवज्जो नहीं देनी है। वीडियोस वगैरह सुन के आप अपनी लिसनिंग इंप्रूव कर लोगे, लेकिन स्पीकिंग के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस आए गलत इंग्लिश बोलने में। जब तक आप गलत इंग्लिश कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकोगे तब तक आपकी इंग्लिश सही नहीं, ठीक है। और रीडिंग जो है वो तो पढ़ पढ़ के आपको आ जाएगी, और राइटिंग जो है वो आपको सिर्फ तब आती है जब आप इनकी, मैंने अपनी वीडियो में भी जो बुक्स बताई हैं, अगर आप ब्रिटन इंग्लिश कर रहे हो तो रेनन मार्टिन पढ़ो, अमेरिकन कर रहे हो तो एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल पढ़ो, आपको इनके एक्सप्रेशंस, इनकी ग्रामर, इनकी पंक्चुएशन समझ आए। तो आई विल पुट दैट वीडियो इन द सजेस्टेड वीडियो समवेयर, तो उसे सुन लेना इफ यू वांट टू। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड राइट नाउ उमर। एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल वाज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। दैट्स गुड। अच्छा, आपने कहाँ पढ़ी थी? नहीं, वो जब मैंने वो राइटिंग और स्पीकिंग शुरू की थी ना इधर आके, तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि क्योंकि when you're writing for a big newspaper, right, you don't want to have simple mistakes, right? तो उस पे फिर मैंने कहा था कि like how can I become even a better writer or reader? वो मैंने पढ़ी थी, it was very helpful. मेरे पास उसकी Amazon Audible पे ऑडियो बुक भी है, मेरे ऑफिस में भी पढ़ी और घर में भी पढ़ी, और उसका फ्री वर्जन PDF जो है वो मेरे इसमें भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मेरे यहाँ पीछे कहीं मेरे बुक्स में पड़ी होगी। आप पेपर पढ़ते हैं, मैं सारा सॉफ्टवेयर रखता हूँ, या लैपटॉप में होता है या Amazon Audible पे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए किन किन न्यूज़पेपर्स में आपके पेपर्स माशाल्लाह पब्लिश हो चुके हैं अभी तक? You know, okay, शुरू में जब मैं आया था तो मैं न्यू जर्सी में था, तो मुझे हमेशा राइटिंग का शौक है, राइट? सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम। मुझे जब भी डिस्क्रिमिनेशन होती है मुझे गुस्सा चढ़ जाता है थोड़ा कि लाइक इंसान और आराम से रहो। तो फर्स्ट मैंने न्यू जर्सी के जब ये इस्लाम की जो इमेज है अमेरिका में, वो जो टेररिज्म की और वायलेंस की, और उसको रद्द करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमारा एक ग्रुप है जो कि लिखता है, तो उसके I joined that and I started writing about clarifying the image of Islam as a peaceful religion. Okay, this is not Islam, ये जो blowing up हो रही है। I started writing about that. Then I went on to write for Huffington Post, which was you know, the largest online newspaper at the time. तो you know, वहाँ एक दफा मैंने बना, फिर उन्होंने मुझे अपना ब्लॉगर बना लिया क्योंकि I just wrote so much, right? Then I kept writing about religious freedom in Pakistan, religious freedom around the world. डॉन के लिए आपने लिखा? डॉन के लिए, नेशन के लिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर तो मैं काफी लिखना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में मैं वैसे पाकिस्तान में हार्मनी के लिए लिखता था ज्यादा, कि हर एक के राइट्स होने चाहिए, सिविल राइट्स वगैरह के लिए, जिन्ना की विजन के लिए, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड द विजन ही हैड फॉर पाकिस्तान। एंड देन यहाँ के न्यूज़पेपर में फिर और एंगल था, वो मोर लाइक इस्लामोफोबिया और इस्लाम का जो इमेज है वो क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि यू नो वी एज डॉक्टर्स हम लोग हमारी सुनते हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, तो अब हर कोई तो नहीं लिख सकता, तो हमने कहा ओके, यू नो, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू इज राइट एंड स्पीक, और फिर लाइब्रेरीज में जाके सेमिनार्स करना अबाउट द ट्रू मैसेज ऑफ द कुरान और इस्लाम, कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फेथ, दिस इज अ ब्यूटीफुल टीचिंग, सारा कुछ वो करना। that was what I, you know, that was what I did, and I think it was great. CNN पे भी 2 आर्टिकल्स मैंने लिखे थे, एक रमजान के ऊपर था और एक इस तरह, but it was nice writing for different papers and getting into that thing. I've not written nice. हाँ, अभी मैंने कोविड पे आर्टिकल लिखा था यहाँ आयोवा के बिगेस्ट न्यूज़पेपर में, लेकिन अभी फिलहाल एक गैप आया हुआ है, तो अभी मे बी आई एम राइट नाउ बिजी विद सम अदर थिंग्स, तो मैं पता है करियर की, तो वो जब खत्म हो जाएंगे आई विल प्रोबब्ली रीस्टार्ट राइटिंग अगेन। जरूर। अच्छा, पता है क्या, ऑन टॉकिंग अबाउट रिलीजियस हार्मनी, जो मैंने यहाँ मस्जिद बनाई है, तो आई सिंगल हैंडेडली अलोंग विद वन अदर फिजिशियन वी रेज्ड $250,000 to $300,000 मस्जिद का। तो हमने अपनी मस्जिद में हर जुमे को ना, जो जितने भी रमजान के 4 जुमे होते हैं वो, और ईद पे वी डू डिनर्स, और ईद पे वी डू ब्रंच। वो खाली मुसलमानों के लिए, इट्स ओपन फॉर ऑल। तो उसमें मैं हिंदुओं को भी बुलाता हूँ, सिखों को भी, जूस को भी, क्रिश्चियंस को भी,
एथियस्ट्स को भी, एग्नोस्टिक्स को भी। Very और good. इट इज ऑल अबाउट कि भाई देख लो हम कितने बड़े टेररिस्ट हैं, आपको गाजर का हलवा खिलाएंगे, आपको समोसे खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और यकीन माने कि इट मीन सच अ फन थिंग। अगर इफ यू जस्ट लुक माय नेम, आप तो आपको मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो है ना अपने इंटरव्यूज दिए हैं, और यही बताने के लिए, जस्ट लाइक यू सेड कि यू वुड थिंक कि यार वी आर नॉट पीस लविंग पीपल, लेकिन जब आप बैठ के हमारे साथ जो है चने खाते हो, चना मसाला खाते हो, पालक खाते हो, तो आपको पता लग जाता है कि हम कितने बड़े टेररिस्ट हैं। आपके मतलब हमारी मस्जिद का इस्फान के गोरे काले और हमारे बच्चे जो हैं सारे, वो आपस में खेल रहे हैं, और उधर हिंदू भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर मुसलमान भी हैं, उधर एथियस्ट भी हैं, और हम उन्हें बस दिखाना चाह रहे हैं कि देख लो हम कैसे हैं, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। And that is, I think, how we can promote religious harmony by promoting awareness. Ignorance जो है ना, I think it was said by Professor Goodboy, ignorance breeds suspicion and suspicion breeds hatred. हम जब तक वो नहीं तोड़ेंगे, जब तक लोगों को awareness नहीं आएगी कि at the end of the day हम सब उसी तरह रहते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे हैं, और उसी तरह हमारा खाना पीना है। तो anyhow, भाई, your biggest challenge that you overcame in this entire journey in past 15-16 years? You know, there's been a few challenges along the way, but I think the biggest challenge was probably, you know, people telling me I can't do this, or this is a far-fetched dream. Becoming an EP doctor. Yeah, becoming an EP doctor right from the start, right from med school. Like you're coming to America, like, you know, residency में going to cardiology के बाद going to EP, you know, so we say, yeah, ठीक है, बस करो. I don't think, you know, it's you know, you're not meant for this. You know, I mean, I think that was a challenge, and I think that's good, because knowing you, I think you work the same way. When challenged, I think I work the best. You get inspired by the naysayers. Yeah, because then it's like, okay, now I have something to prove. हाँ, exactly. अगर हर कोई ये कहते हैं, हाँ यार तुम तो आराम से नोबेल लॉरेट ले रहे हो, फिर तो मैं काम ही नहीं करूंगा ना। लेकिन एक दिन अगर किसी ने कह दिया कि तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर हो सकता है मैं वाकई शुरू कर दूं कोई काम करना। You know, I've said this to my directors as well, fellowship के और residency के, कि यार जो चीज मैं कर सकता हूँ मुझे पता है कर सकता हूँ, और जो चीज मैं नहीं कर सकता ना, वो मुझे पता है मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे दुनिया का हर बंदा आके कह रहा है ना कि ये मैं नहीं कर सकता, और मुझे पता है वो काम मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो करूंगा, चाहे मुझे दुनिया का हर बंदा कह रहा है। क्यों? क्योंकि you know deep down inside कि what your strengths are, and you need to have faith and believe in your strengths, otherwise you can't survive. Absolutely. Absolutely. So Kashif bhai, if you have to do this all over again, what would you do differently? You know what? Honestly, I think I would still, okay, let's start. I would still go to King Edward. That King Edward is amazing. I think that the training I got from King Edward was just brilliant. And we're not talking about medical training. It's the life training. Oh, okay. What's that? नहीं, आप किंग एडवर्ड में खाली मेडिसिन की बात कर रहे हैं या लाइफ ओवरऑल जनरल? Just life overall. I think सबसे ज्यादा mature मैं वहीं पे हुआ था किंग एडवर्ड में जाके, you know, medical school में. Just medical training तो खैर बहुत आला है, you know, इतना एक चीज जो मैं पहले नहीं बताना भूल गया, I'm just gonna let you know here, कि coming from doing O levels and coming from a British system of education in the Gambia, West Africa, मुझे ना बहुत कंसेप्चुअल किस्म की लर्निंग का शुरू से आदत है और शौक है मुझे। रटा आई नेवर कुड हैव डन, एंड दैट्स वन थिंग आई वुड से कि किंग एडवर्ड में दैट वाज आल्सो अनदर शॉकिंग थिंग कि लाइक वो रीडिंग रूम में बैठ के, लाइक यू नो, देयर वर सम स्टूडेंट्स, एंड यू नो दिस उमर, देयर वर सम स्टूडेंट्स वो आपको पूरा पेज छाप देंगे एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड, राइट, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, और वो टॉप भी कर देंगे, टॉप भी करेंगे. So it was just like, that was a little shocking for me. It was like, why are you doing this? First of all, it sounds painful. Okay, itna बैठ के memorize कर रहे हो पूरा कुछ, and then छाप रहे हो. But that was one thing, क्योंकि मुझे लगता था कि, so alhamdulillah, like जो entry test था, उसमें सबसे highest mark मेरे आए थे उस साल में. अच्छा, पूरी state में? पूरी पंजाब में. तो you know, there's entry test के marks and there's FSC के marks combined होते थे. तो एंट्री टेस्ट में हाईएस्ट मेरे थे, लेकिन कंबाइन करके टॉप थी एमकैट हैं, आपने एमकैट टॉप किया था? आई डिड, बट देन दोनों मिला के आई वाज आई थिंक नंबर 4 जब आप दोनों को मिलाते हैं ना, क्योंकि मेरे एफएससी में थोड़े काम थे. तो देन हियर्स व्हाट हैपेंड, मुझे था कि ओके मेरे पेरेंट्स को था ये हमेशा टॉप करता है, टॉपर है ये, और राइट, एंड देन एफएससी में जाके मेरा प्रॉफ में आई मीन आई वाज डेफिनेटली नॉट द टॉपर, आई मीन आई हैड गुड स्कोर्स, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि इसने पढ़ाई छोड़ दिया.
जबकि मैं रट्टा नहीं लगा सकता. Like that was a big challenge for me. I was like, okay, I'm not going to do this. I refuse to do this because I think it's a waste of my time. And I understand a concept and I like it and I enjoy it. And I am not going to ever ratta things like that because it doesn't make sense to me. So फिर I had to convince my parents मैं पढ़ ही रहा हूँ लाहौर में. I'm not doing anything else. I promise you that. It's just a very different system. So I did great in med school, but I was never like, you know, number one topper नहीं था उस system में. हम में से कोई भी नहीं था. You So know, if I could मैं change, that was one thing I would change कि वो system of जो था ना education अब का फिर change हो गया वैसे. अब MCQs नहीं होते. होते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है एमसीक्यूज का वो भी रट्टा बेस्ड था. लाइक परसेंटेज पूछ रहे हैं, नंबर्स पूछ रहे हैं, राइट? इट्स नॉट कंसेप्चुअल. तो हो सकता है, आई एम होपिंग, कमेंट्स में बता देना यार कि आजकल क्या हालात हैं. मुझे भी ग्रेजुएट किया तो 12 साल हो गए. तो मैं फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस मैं भी भाई इट वाज वेरी सिमिलर कि मैं जो था, जो शीट थी, आप जितने लाइक नहीं थे, नंबर 4 पे नहीं था मेरा ख्याल है, मेरा नंबर 9 था या 11 था. लेकिन मैं जो था, मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, और मैंने पिछली वीडियो में भी इस पे बात की है कि फिजियोलॉजी के मौलाना साहब थे, उन्हें पता था कि मैं यूएस जा रहा हूँ ग्रीन कार्ड के लिए. उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी. वो मुझे कहीं मिले, कहते तुमने क्लास टेस्ट मिस किया है. मैंने कहा जी मैं यूएस गया हुआ था, मैंने एप्लीकेशन डाल के लीव लेके गया था, तो मुझे ग्रीन कार्ड के लिए जाना पड़ता था हर साल, तो आई एम बैक. तो उन्होंने कहा रोल नंबर क्या है? मुझसे रोल नंबर पूछा 238. अच्छा ठीक है. वाइवे में मैं गया, उन्होंने मुझसे पूछा 238 ग्रीन कार्ड अमेरिका. मैंने कहा यस सर. पहला मेरा प्रॉफ था फर्स्ट ईयर का. मुझसे एक क्वेश्चन किया सर ने, इन विच गायरस ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स लोकेटेड. ना रीनल था ना सीएनएस था कोर्स में, ठीक है? ना रीनल था ना सीएनएस था. और मुझसे फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इन विच गायरस ऑफ द कोर्स इज द सेंटर ऑफ मैच्योरेशन. मैंने कहा सर गायरस व्हाट इज दैट? मतलब मैच्योरेशन रिफ्लेक्स. तो मैं सोच रहा था गायरस क्या होता है. कहते हा 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 गुड लक नेक्स्ट टाइम. उन्होंने मेरी सप्ली लगा दी. नो. और एक सवाल पे God. 0 दिया उन्होंने मुझे अपने मेजर वाइवे में. मेरी ओरल में सारा कुछ रिटर्न में पास था, ओरल में 46 नंबर थे क्योंकि उन्होंने 0 दिया. Oh my God. One of the biggest challenges I've faced in my life. उसके बाद भी बड़े आए, लेकिन that was one actually the first biggest challenge. क्यों? क्योंकि I went through the same phase that you did कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये तो बच्चा बोर्ड में पोजीशन लेके आ रहा था, इतना टॉप पे था, सप्ली आ गई इसकी यार. और मेरे फादर जो थे, अम्मी अब्बू, वो डॉक्टर नहीं थे, तो उन्हें लगता था कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई. अब्बू मेरे कहते थे यार मैं आर्ट्स में हूँ, तो बहुत ही नालायक आदमी होता है जिसकी आर्ट्स में सप्ली आती है. तुम तो बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं, मतलब किन चक्करों में पड़ गए हो. So that was pretty tough, you know, and I can relate to your agony as well. Yeah. Oh my God, I didn't know this yet. Did you tell me this before? नहीं. जब हम आते, wow, I didn't know you had supply. मेरी सर 2 सप्ली है. मैं दूसरी सप्ली की भी कहानी किसी दिन सुनाऊंगा, वो ईएनटी की. Oh my God. Wow. लेकिन does it really matter, right? हाँ, exactly. Right? Exactly. मेरे कोई बहुत अच्छे स्कोर नहीं थे. स्टेप 1 में मेरा 220 था, स्टेप 2 सीके में 213 था, सीएस में मेरी अटेम्प्ट थी. नथिंग मैटर्स. अब आपको पता है मैं क्या हूँ. लाइक आई डोंट नीड टू टेल यू, राइट? Absolutely. मेरी काम पे मेरी क्या वैल्यू है, यू नो, मैं क्या कर रहा हूँ. तो these सप्लीज, ये चीजें, आपको लगता है कि लाइफ आपकी बदल जाएगी और इम्पैक्ट होगा इन चीजों का. नहीं होता है. आपकी लाइफ चलती है, और आपकी लाइफ इस चीज पे चलती है. ये रेस नहीं है, ये मैराथन है. और आप गिर के कितना उठते हो उस पे डिपेंड करता है. ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि एक दफा गिर गए हो तो क्या हुआ. एनी एडवाइस फॉर पीपल इन योर शूज भाई 15 years ago? Yeah, and work hard, be very professional, and watch Omar Tariq's media channel. And I think, honestly speaking, if I'm not saying this to pat your back at all. You know me. This is something that is very helpful, and I wish there were things like this when I was a medical student. But definitely, you can get a lot of guidance from this. But you know, be positive, be confident, and be sincere and genuine in what you're seeking. Don't try to do any dramabazi, and you know, don't try to do any like do numbri or whatever. You know, leave those attitudes behind. And you know, one reason why America is what it is the attitude of people. The people are professional, they're sincere and genuine with what they're doing. So remember those. You have a great strength. Okay, you're very smart as a Pakistani student, but then your professionalism should show that as well. And then work hard towards your goal. And like Umar also said earlier, the sky's the limit. Good. Anything else you would like to add before I wrap this up? Oh, I think that's it. I think this is a great opportunity for everyone, and anyone who wants more, who thinks they like electrophysiology or even cardiology.
and who want to know more about this field, feel free to get in touch with me. I mean, you can find me on Facebook, or you can just मैं आपका email address दे दूंगा description में. Absolutely. And then just get in touch with me, and I would love to guide you if you're interested in this field. And even if you're not interested, but you want to learn more about EP or about cardiology fellowships, whatever, just let me know, and I'll be happy to help you. Thank you very much for coming, Kashif bhai. Thanks a lot. Thank you for doing this. You're welcome. So I hope you all learned something from this video. If you did, please like it, share it with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell, and like I always say, never give up, never lose hope. Bye.